Good morning. So we shall start, and we will continue with the Vedic civilization. So we have started something regarding the Vedic literature. Yes, good morning to all of you. Shakib, Sibendra, Vishal, Deepika, Nitin, Vishal, all of you. So here, the Vedic culture or the Vedic civilization. We started talking about this period, which according to the old NCRT, we have 1500 BC to 600 BC, Vedic period. So why it is called Vedic period? Because Vedic literature was composed during this period. Vedic literature was composed during this period. So there are two types of Vedic literature. Shruti. Shruti means God conveyed to some rishi. गॉड बोल रहे थे और ऋषियों ने सुन लिया और उसी को फिर हमें सुनाया, श्रुति. वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद this is called Vedic literature, but श्रुति literature. गॉड ने बोला था एंड ऋषियों ने सुना, सो इट इज कॉल्ड श्रुति लिटरेचर. वेद. There are 4 Vedas. Rig Veda, Sham Veda, Rigved, Samved. Atharvaved. Yajurved. Yajurved and Atharvaved. Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. This is Shruti. Shruti literature. This is Shruti literature. Shruti literature. And Smriti literature. Smriti. Smriti
लिटरेचर में जो याद किया गया, जो ऋषियों ने हमें याद करवाया, स्मृति लिटरेचर, स्मृति, वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्मृति, we have Vedang, 6 Vedang and Upved. 6 Vedang and Upved. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ऋग्वेद, historical information of the Aryans. Historical information of the Aryans. मतलब whatever the social, economic and political life, so historical information of the Aryans. Rig Veda, we will talk in detail. Sham Veda, musical composition of the hymns of the Rig Veda. Musical composition of the hymns of Rig Veda. Musical composition of the hymns of Rig Veda. Origin of Indian music. Origin of Indian music का मतलब है क्लासिकल इंडियन म्यूजिक. इसमें तुम लोग पवन सिंह मत समझ जाना. Origin of Indian music. Origin of Indian music. ठीक है, श्रेया सिंह अभी बता देते हैं कितने नंबर का आएगा. देखो, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, आता है था, और मेंस में भी क्वेश्चन आने लगे हैं एंशिएंट इंडिया से. ठीक है ना, पूरी तरह से आप अलर्ट रहिएगा. मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे टाउन प्लानिंग पर क्वेश्चन आ सकता है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, आर्ट एंड क्राफ्ट पर. सो यू हैव टू बी रेडी. Origin of Indian music. Musical composition. Yajurveda is origin of rituals. Rituals. Origin of rituals. Yajurveda is origin of rituals. Atharveda Atharveda, it is Tantra Mantra. आयुर्वेद, जितने जड़ी बूटी हैं, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, जादू,
मैजिक वेजिक सब रहता है इसमें। So there are 4 Vedas. Musical composition of the hymns of the Rig Veda. Musical composition of the hymns of Rig Veda. I hope all of you have noted it. My genius boys, girls. एक बच्चा भी बोला है ना कि आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कंबल कुटाई करवाऊंगा उसी इलाके में, उसी शहर में अपॉइंट किया गया लोगों को। हाँ, एक बच्चा भी एकदम नहीं बोल रहा है, शाबाश। बोले कि जरा आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती मेरे। थैंक यू आदर्श। एक बार बोल के देखो तुम लोग, ठीक है। इतने मोतियों जैसे अक्षर है हमारे। अक्षर नहीं है, पर्ल्स है, पर्ल्स, मोती। देखो इधर बीच में हमने इंटरवल लिया 1000 BC। BC। तो ऋग्वेद, तो इसको ऋग्वेदा बोलते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज ऋग्वेदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस इज अ ऋग्वेदिक पीरियड। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये देखो ब्राह्मण, ये सारा जो व्हाइट रिंग में है ये सब कंपाइल्ड हियर, सो इट इज कॉल्ड लेटर वैदिक। दिस इज कॉल्ड लेटर वैदिक लिटरेचर। एक बच्चा बोला जबरदस्ती, ये बदमाश बच्चा है छाया सिंह, बोले कि नहीं आ रहा समझ में, ये बदमाशी है प्योर। वरना बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप आदमी भी समझ जाएगा कि क्या लिखा है मैंने वैदिक लिटरेचर। तो ये सारा हो गया लेटर वैदिक लिटरेचर। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांग, उपवेद, all compiled after 1000 BC, that compiled in the later Vedic period. Later Vedic literature. Smriti remembered those narrated by the rishi. Narrated by rishi. मैंने कंबल कुटाई शब्द हरियाणा में सुना, उसके बाद
पिछले 10 साल से मैं ये बोल रहा हूं। वो दिन कंबल उड़ा के कूट देते हैं लोगों को, पता नहीं चलता ना, लड़ाई भी नहीं होती परमानेंट, कौन कूटा पता भी नहीं चलता है। तो परमानेंट एनिमिटी होनी नहीं चाहिए, बदलाव पूरा हो जाना चाहिए। सो वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक लिटरेचर। तो सारे बच्चे लिख लिए इसको, सारे बच्चे ने लिख लिया इसे। यस। सो हु कंपोज दिस वैदिक पीरियड? इट इज कॉल्ड, दे वर द आर्यंस। आर्यंस कंपोज दिस वैदिक पीरियड। ध्यान रखना बच्चे, दिस इज फॉर जीएस, दिस इज फॉर जीएस। इसलिए ऑप्शनल में की तरह हम लोग एनालाइज नहीं करते इतना ज्यादा कि बोथ वे माइग्रेशन होता था। इट्स नॉट ओनली आर्यंस केम टू इंडिया, बट इंडियंस ऑल्सो वेंट आउटसाइड। देयर आर वेरियस थ्योरीज which is not your requirement. Which is not your requirement. So 1500 BC to 600 BC. So this Vedic period is basically composed by Aryans. Vedic period composed by Aryans means all the Vedic hymns, Vedic literature composed by Aryans. Aryans came from Central Asia. हालांकि ये थ्योरी काफी चैलेंज्ड है। आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दे वर पेस्टोरल्स। So they came in search of pasture land. They were pastorals, so they came in search of pasture land. Aryans came from Central Asia. They came as a pastorals. They came in search of pasture land. चारागाह की तलाश में आए थे, right? So चारागाह की तलाश में थे. So they came in search of pasture land. Pastorals. Came from Central Asia and they came in search of pasture land. So they came in waves. They came in waves. मतलब एक वेव आया, दूसरा वेव आया, तीसरा वेव आया. So one group of the Aryans came, second group of the Aryans came, third group of the Aryans came. So they came in waves. They came in waves.
Aryans came from Central Asia and they came in waves. So they were the pastorals. Right? But you can see, if pastorals are the nature that why Aryans came, those Indian pastorals were also going outside. So there were two-way migration. But probably the modern theory is that Aryans were not outsiders, they were from the local geographical areas only. After DNA analysis of the theory of Rakhi-Garhi, fossil of Rakhi-Garhi, we conclude that all the peoples living in India have the same DNA. Okay, but right now we are still studying the old books and this theory was not included in the syllabus. So we are going through this pattern only. So Aryans came from Central Asia. They were pastorals. So they came in search of pasture land, because it is a specialty of the pastoral community to go for transhuman migration. Right. So they came in search of pasture land. They came to India because it is a specialty of pastoral community for transhuman migration. Right? लिखना है इसको. They came to India because it is a specialty of the pastoral community for transhuman migration. For transhuman migration. They came to India because it is a specialty of the pastoral community for transhuman migration. Transhuman migration का मतलब होता है one place to another place. Pastoral मतलब चारागाह, चरवाहा. So the pastoral group, they keep on searching the grass. दूर से ऐसे देखने पर ग्रीन लगता है. So they came to India in search of pasture land. They came to India because it is a specialty of the pastoral community for transhuman migration. And they came in waves. मतलब phase में आए थे. One group of Aryans came, they settled. Then another group came, they settled. So they came in waves. और आप नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल होता है, कोएग्जिस्टेंस होता है. राइट. सो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस, ये सब हुआ. इसी को हम लोग ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ट्राइबल वॉर बोलते हैं ऋग्वेद में. तो whenever they came to new area, they had a struggle, conflict and coexistence. Whenever they came to new area, they had a struggle, conflict and coexistence. Struggle, conflict and coexistence. Whenever they came to new area, they had a struggle, conflict and coexistence. Conflict and coexistence. So they came in waves. And here we have the struggle, conflict and coexistence.
Struggle, conflict, and coexistence. Which is called tribal war. Tribal war. This is tribal war. Struggle, conflict, and coexistence. This is tribal war. And once coexistence is there, means now they started living together, they had a composition of the culture. So therefore in northwestern India we have found composite culture, that is mixture of many cultures, right? Then suppose one group came, they settled here, then another group will come, then again they had a fight with this group, keep on fighting among themselves. So that is called tribal war. So struggle, conflict, and coexistence. So Aryans came from Central Asia. They came in search of pasture land. It was not invasion. It was migration. It was migration. So main theory is it's a migration and not invasion. And not invasion. Migration and not invasion. Invasion तो तब होता है ना जब border हो, BSF हो, एकदम open है, you can come, you can go. So this is not invasion, but it was migration. Why migration? In search of pasture land. राइट बेदाज नहीं है, बोलते थे बच्चे, लिखना आता कहां था उस वक्त, लिखा तो बाद में गया. ओरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बोल तो सकते ना, लिख नहीं सकते तो. आते ही लिखना थोड़े ना शुरू कर दिए वो लोग. रवीश कुमार, मिस्टर रवीश कुमार, so they were transmitting the hymns orally. They wrote much later. Generation to generation, it was translated. हजारों साल तक. Okay, fine. So they came in search of pasture land. Now, what is meaning of the word Aryan? What is meaning of the word Aryans? What is meaning of the word Aryans? They were living side by side. देखो आर्यंस का भी मेन हैबिटेशन जोन कौन है? इंडस और सरस्वती. Indus people were also living in the same zone. So they might be living side by side. Okay. And they did not came from outside. So that theory may be one theory. I am not sure. Nobody can be sure that which theory is correct. But this may be one theory.
This may be one theory. So what is meaning of the word Aryans? Earlier it was said, लिखना बच्चे, earlier it was said that Aryans were a particular race, superior, noble community, Aryans were particular race, superior race, noble community. Right? So particular race, superior or noble community. But later on, many philological studies. So many philologists, they describe about the Aryans. According to philological studies, philology क्या होता है? Study of language. So there was one great philologist, Max Muller, and Max Muller said that Aryans were the linguistic community. There was a language spoken around the Central Asia. Language is spoken around the Central Asia, Indo-European language. Ukraine, Kazakhstan, Iran, Indo-European language. They migrated to different parts of world, and thereafter their pronunciation keep on changing. जैसे इंडिया में संस्कृत बोलने वाला आर्यंस है, ईरान में फारसी बोलने वाला आर्यंस, रशियन स्पीकिंग आर्यंस, इटालियन, जर्मन्स, ये सब आर्यन है बिकॉज दे स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, रशियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, पर्शियन Indo-European. Remember one thing, Iranians, they are Aryans, but Iraqi, Arabic. Arabic is not an Aryan language. Arabic is a tribal language. And Farsi is an Aryan language. इसको लिखना यहां से. According to philology, philology is also a study of language. According to philology, a study of language, philology, study of language. Aryans were the people who speak Indo-European language. Aryans were the people who speak Indo-European language. Therefore, they were linguistic community. Therefore, they were linguistic community. तो एक अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यंस,
So basically it is what? A linguistic community. So they were linguistic community. Linguistic community. Indo-European language. So they were linguistic community. Sanskrit, Persian, Russian, German, Italians, all are Sanskrit, Persian, Russian, German, Italian, all are basically called Aryan language. So those who speak these languages, they are called Aryans. इंडिया में संस्कृत बोलने वाला आर्यंस. So those who speak this language, they are called Aryans. लिखा या नहीं लिखा सारे बच्चे? जल्दी रिस्पॉन्ड करिए कि आपने इसको कॉपी किया, ठीक से लिखा. जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए. आप होशियार हैं. आप मनीषा शर्मा, सुमन राज, शिवेंद्र सिंह, आस्था, ज्योति, सारे लोग. वाह, अब तो इतना आने लगा फिर बोल नहीं पा रहा हूं मैं. आदर्श कुमार, नेहा, सबका नाम मुझे याद हो जाए. हालांकि सैकड़ों बच्चे हैं और जब आप लोग बोलने लगते हैं ना तो केवल 3 नाम ही आता है इसमें, उसके बाद ऊपर चलता चला जाता है, इसलिए मिस कर जाते हैं हम. इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है. जब नजर आ जाएगी तो ले लेंगे. नाम से क्या रखा है, हमारा कनेक्शन तो परमानेंट है ही और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हमेशा रहती है कि आप बेहतर से बेहतर घर में अपना बिहेवियर रखें, पढ़ाई करें. जब आप अच्छे पढ़ाई करेंगे ना तो देखिएगा आपका बिहेवियर पैटर्न भी अच्छा हो जाएगा. लोग आपको एडमायर करेंगे देखते ही. नॉलेज से बड़ी पावर चीज कोई भी नहीं है. नॉलेज इज द रियल पावर. आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं. अगर आपके पास नॉलेज है तो सबसे बड़ी ताकत आपके साथ होती है और ये इतना बड़ा स्ट्रेंथ है कि बहुत सारे लोग बौने पड़ जाते हैं इसके आगे. इसलिए आपका काम केवल और केवल पढ़ाई करना है. देखिएगा कई सारे बूढ़े लोग भी हो सकता है 2-4 साल में मर जाएं, अगले साल मर जाएं, बट वो किताब पकड़े रहते हैं. बिकॉज नॉलेज इज द रियल पावर. ठीक है बच्चे? कुछ भी काम नहीं देता. ना आपकी जाति, ना आपका धर्म, ना आपका परिवार, ना आपके रिश्ते. जो सबसे बड़ा लॉयल है वो आपका नॉलेज है. जो हमेशा मरने तक आपके साथ चिपका है और वही हमेशा साथ भी देता है. So Aryan language. So Aryans is basically what? The word meaning of the word Aryans is basically linguistic community and not
race, not superior race or not a noble community. The meaning of the word Aryans is linguistic community. Okay, so Aryans came from Central Asia. They came in search of pasture land, and meaning of the word Aryan is linguistic community. तो भाई जरा ऋग्वेद पर एक नजर डालते हैं। हमने ये बताया अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। एक एज के बाद जब आपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, आप जंगल चले जाते हैं और अपने अनुभवों को लिखते हैं। दिस इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अपने अनुभवों को साझा करते हैं। फॉरेस्ट बुक, अरण्यक। आफ्टर you completed your family obligation, you started remaining outside the family. ठीक है, जंगल में चले जाते हैं आप, खाना खा के सीधा निकल जाते हैं। And you share your life experiences, philosophy. And Upanishad is also book of scientific philosophy. Scientific philosophy. Book of scientific philosophy. पेस्टोरल क्या था? चरवाहा, जो गाय चराता है, भैंस चराता है, पेस्टोरल कहलाता है। पेस्टोरल कहलाता है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ओके, अब आ जाइए बच्चे ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक पीरियड 1500 BC टू 1500 BC to 1000 BC। BC. This is a Rig-Vedic period. ये पूरा का पूरा पीरियड जो है ना, ये वैदिक पीरियड है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद सब कंपाइल हुआ, इसलिए इसको वैदिक पीरियड बोलते हैं। देयर आर 4 वेदास: Rigveda, Samveda, Yajurveda and Atharvaveda. So here only Rig Veda was composed in this 500 years. Only Rig Veda was composed. Right? So in this 500, only Rig Veda was composed. Rig Vedic period. Let us understand what is Rig-Vedic period. Source क्या है? Source is only Rig-Veda. What is the source of this period? Rig-Veda. लिखते रहिएगा साथ में लिखिएगा बच्चे। Society of the Rig-Vedic period. Society of
ऋग्वेदिक में, सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। Society of Rigvedic period. It was homogeneous society. सब बराबर थे, homogeneous society. It was egalitarian society. Homogeneous society and egalitarian society means all the social economic equality, social economic social and economic equality are there. Social and economic equality are there. The society is homogeneous and egalitarian. Varna system evolved at the end of the Rig Veda. At the end of the Rig Veda. Varna system evolved at the end of the Rig Veda. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Varna system evolved at the end of the Rig Vedic period. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. There are 4 Varnas. It evolved at the end of the Rig Vedic period. End of the Rig Vedic period मतलब समझे आप, यहां पर 1000 BC around this Varna system had evolved. Otherwise, society was homogeneous. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The society was homogeneous. So Varna was based on karma. Based on karma, not on birth. Varna was based on karma and not on the birth. Varna was based on karma and not on birth. There was inter-Varna mobility. Inter-Varna mobility. Varna was based on karma and not on the birth, so there was inter-Varna mobility. एक से लिखना सारे बच्चे. There was inter-Varna mobility.
So burn was based on karma and not on the birth. There was inter-burn mobility. So those who were involved in philosophical discussion, rituals, they were Brahmins. Both were those involved in fighting, Kshatriya. Those involved in the production activities, Vaishya, and those who served the people, Sudras. But even this Sudra can become the Brahman depending on their karma. If Sudra had learned the Vedic rituals and other things, will got the status of Brahman. Like Kanva Rishi, he was by birth Sudra, but he became the status of, got the status of Brahman. Vishwamitra, he was Kshatriya, he became Brahman. So, burn was based on karma. And there was inter-burn mobility depending on karma. राइट सो एक तो लास्ट में डेवलप हुआ, ऋग वैदिक पीरियड के लास्ट में बर्न सिस्टम डेवलप हुआ एंड देयर वाज इंटर बर्न मोबिलिटी. There are so many examples who taking birth in the Shudra but got the status of Brahmin. Many. So this is why the Rig Vedic society is considered as ideal society. Condition of women was very respectable. Very respectable. Very respectful. So condition of women was very respectful. Condition of women is very respectful. There was no child marriage. There is no polygamy. There is no polygamy. So girl got married after certain age. So no child marriage. No polygamy. Women had right for higher education. Women had right for higher education. Women had right for higher education. Some women wrote hymns in the Rig Veda. Some women wrote hymns in the Rig Veda. ऋग वेद में कविताएं लिखी, wrote hymns. In the Rig Veda. Some women wrote hymns in the Rig Veda.
wrote hymns in the Rig Veda. Hymns in the Rig Veda. Like Ghosha, Apala, Vishwavara, Sikta. Ghosha, Apala, Vishwavara, Sikta. And one more, Lopamutra. 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 So these are the name of the women mentioned in the Rig Veda who wrote hymns in the Rig Veda. Society was patriarchal. Patriarchal. But women had the property right. Had the property right. Society was patriarchal and the women had the property right. Society was patriarchal, but women had the property right. Society was patriarchal and women had the property right. Women had the property right. But women had the property right. Patriarchal means rights and obligation passed from father to son. Rights and obligation passed from father to son. बेटा ही होगा उत्तराधिकारी. But women can purchase and can possess the property.
दोनों में फर्क पता चला आपको? सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करिए प्रॉपरली। Okay. There was no caste system. No sati. Widow can have niyog. Niyog. Niyog क्या होता था? What is niyog? Widow can cohabit with in-laws to have the son. To have the son. Son will get the name of the father. Son had the name of the father. Deceased father. बेटा पैदा होगा in-law से, but son will get the name of the deceased father. Widow can have the niyog. Okay, so no caste system, no sati. Widow can have niyog. Niyog means cohabit with in-laws to have the son. And son will get the father of deceased, name of the deceased father. जो बाप मर गया था उसका नाम होगा. So no caste system, no sati. No rituals. No idol worship. No rituals, no idol worship. Therefore, no untouchability. No untouchability. No untouchability. So obviously the Vedic society was an ideal society. Ideal society. No rituals, no idol worship, no animal sacrifice. देखो, रिचुअल्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी होगा. इसको छूना है, इसको नहीं छूना है. प्योरिटी, इम्प्योरिटी. एंड idol worship perfect the rituals. So because of the rituals, untouchability had started. Right? So because of the rituals, untouchability had started.
and rituals will start in the later Vedic period. यज्ञ होगा, कर्मकांड होगा. Okay? Yes. No untouchability. बहुत समझ में आया कि रिचुअल्स कैसे अनटचेबिलिटी, जो रिचुअल में इस अनटचेबिलिटी टचेबिलिटी काइंड थिंग है, दैट केम इन द सोसाइटी लेटर ऑन. It was patriarchal. So Rig Vedic society considered as an ideal society. जितना रिचुअलिस्टिक उतना ज्यादा सोशल टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी के फैक्टर्स. इकोनॉमी of the Rig Vedic period. Source is the same, Rig Veda. Economy of the Rig Vedic period. Economy. It was mixed economy. Pastoral plus agriculture. Both was practiced. Both was in practice. Mixed economy. Pastoral economy was dominant economy. Pastoral economy was dominant economy. Agriculture was very less. Very less. Agriculture was very less. Cow was the main form of economy. Cow was the main form of economy. Cow was main form of economy. Around 176 times the word "gau" is mentioned in the Rig Veda. Gau means cow. It is around 176 times mentioned in the Rig Veda. Second highest animal. Maximum time Ashwa is mentioned, horse. Ashwa is mentioned around 215 times in the Rig Vedic hymns. 215 times in the Rig Vedic hymns. So in Rig Veda, the second highest animal mentioned is cow. Gau, it is mentioned around 176 times. Ashwa is mentioned around 215 times. Highest animal mentioned in the Rig Veda.
पेस्टोरल अलग है और खेती अलग होता है। ओके, टू हंड्रेड। काउ इतना इंपॉर्टेंट था कि इवन डे टू डे लाइफ ऑल द वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड काउ, गौ से डिराइव होता था। जैसे सपोज करिए दिल्ली से चंडीगढ़ कितना दूर है, दिल्ली से जयपुर कितना दूर है, तो टुडे यू विल से 200 किलोमीटर, बट वहां पर जो मेजरमेंट करते थे इट वाज कॉल्ड गब्यूती, मतलब अर्ली मॉर्निंग यू ओपन द काउ and how much distance traveled by cow in a day, it is called one gabyuti, right? So 5 दिन में पहुंच जाएगा चंडीगढ़ तो 5 गब्यूती हो गया, या 10 दिन में पहुंच जाएगा 10 गब्यूती हो गया। So what is गब्यूती? It is unit of distance. It is derived from the word gaw. It is unit of distance. गबिष्टि, गोशु, गवेषणा, it is war. एक ट्राइब दूसरी ट्राइब का दिन रात गाय खोलने के चक्कर में रहता था, और जैसे ही गाय खोलता था वॉर हो जाता था, और उसको गविष्टि बोलते थे। और जो जीतने वाला ट्राइब होता था और गाय खोल लेता था उसका। तो दिन भर ये लोग इसी फिराक में रहता था कि किसका गाय कैसे खोलें। तो गविष्टि, गोशु, गवेषणा, these are for the war. These are the words used for cow. मुकेश अंबानी, गोमट, सबसे धनी आदमी जिसके पास बहुत सारे गाय, रिच मैन। राइट, गोमट, रिच मैन। गोपति, किंग, किंग। गोपति क्या है? किंग। यस, गोसु गवेषणा भी गाय की खोज गविष्टि बोलते थे। तो गोमट, रिच मैन, गोमट, किंग।
रिच मैन। गोपति हमेशा गरीब दिखता है, बिल्कुल वेरी पुअर। गोपति इज वेरी प्योर, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे गुम्मट को पॉकेट में रखता है अपने। इकोनॉमी जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली गाइड द पॉलिटी एंड सोसाइटी। So cow was the main medium, so entire life of the Aryans was revolving around cow, because their economy is revolving around cow. Therefore the social life also. दुहित्री, दुहित्री बोलते थे डॉटर को। ये लोग पूरे दिन कोई काम नहीं करते थे, शाम को गाय का दूध निकाल के घर में रख देती थी और कहती थी कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली इकोनॉमी, contribution in the family economy. Contribution in the family economy. Yes. So Duhitri, daughter. Gopati is king. So you can understand that how important this pastoral economy was. एग्रीकल्चर बहुत कम करते थे। एग्रीकल्चर was very limited. Wheat and barley was produced. Wheat and barley. Wheat was called Godhum and barley was called Yab. बार्ली बहुत जल्दी तैयार हो जाता था। ये चारागाह के लिए भी होता था और फूड के लिए भी होता था, बहुत कम। सो अगर सवाल पूछे आपसे कि व्हाट इज स्टेपल डाइट ऑफ द आर्यंस, आर्यंस का खाने पीने का क्या सामान होता था, तो आप क्या जवाब देंगे, जल्दी बताइए। व्हाट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द आर्यंस? इतना कम होता था, व्हीट बार्ली क्या खाएगा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। नाश्ते के लिए दही खा लेता था, भूख लगता था दूध पी लेता था, खूब जोर से भूख लग गया घी पी लेता था लोग। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और जिस दिन रोटी बन गया ना, समझिए कि बर्थडे पार्टी हो गई उस दिन। बहुत रेयर, दिस वाज वेरी रेयर। Milk and milk product. So wheat was very rare. Aryans were aware about gold and silver. Gold and silver was used as medium of exchange. Medium of exchange. Gold and silver was used as medium of exchange, but not as a coin. Not as a coin. Not as a coins.
Gold and silver was used as a medium of exchange and not as a coin. Gold and silver was used as a medium of exchange and not as a coin. Gold was called nisk and silver was called satman. Silver was called satman. Gold was known as nisk and silver was satman. So nisk and satman, gold and silver. It was not as a coin but a medium of exchange. Copper was mostly used and it is known as Syamayas. Copper is known as Syamayas. Nisk, gold was known as nisk but not as a coin. ध्यान रखना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप सोना देकर के व्हीट खरीद सकते, बट नॉट एज कॉइन्स. But not as coins. So Syamayas, gold and silver. ओके बिपिन, कीप ऑन राइटिंग, खाली छूटना नहीं चाहिए कोई चीज, ये ध्यान रखना. तो इकोनॉमी वाज मिक्स्ड इकोनॉमी. पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल, देखो इसको समझना जरा सारे बच्चे. देयर आर मेनी ट्राइब्स इन द फैमिली. एक ट्राइब है तो उसमें बहुत सारे फैमिली होंगे, ज्वाइंट फैमिली होगा. So family is the basic unit of society and basic unit of political organization. Family is a basic unit of society and basic unit of political organization. Family को बोलते थे कुला. One family is called kula and head of the kula is कुलपति. कुलपति और गृहपति और दंपति. So family is the basic unit of political organization. Head of the kula is family, कुलपति और गृहपति और दंपति. कुलपति और गृहपति और दंपति.
This is basic unit of society, basic unit of political organization, कुला. कुला के बाद होता है ग्राम. ग्राम. Gram is not a village. It is a fighting unit. Fighting unit. Head of the gram is called Gramin. Gramin. So, मान लो कि इस गांव में, इस घर में 2-4 फाइटर रहते हैं, 2 रहते हैं, इस घर में 3 फाइटर रहते हैं, 1 फाइटर रहता है, सबको मिलाकर के एक ग्राम बना और इसका टीम लीडर विल बी ग्रामीण. सो हेड ऑफ अ ग्राम, ग्राम इज अ फाइटिंग यूनिट. बटालियन. बटालियन. एक ट्राइब में कई बटालियन होते थे, फाइटर्स. ये लोग प्लानिंग करता था, तुम लोग बाएं से हमला करना, हम दाएं से हमला करेंगे, बीच वाला गाय खोल लेगा. यही काम करता था भर दिन. ये लोग गाय खोलने के फिराक में रहता था और फिर गाय खोलने के फिराक में वॉर हो जाता था. सो कुला से बड़ा यूनिट ग्राम है. देर आर मेनी ग्राम इन द ट्राइब. एक ग्राम हो गया, दूसरा ग्राम हो गया, तीसरा ग्राम हो गया. कई बटालियन बनते थे, 10-10 लोगों के, 5-5 लोगों के बटालियन. सो ग्राम मीन्स ग्रामीण. उसके बाद जो बच गया, वुमेन, चिल्ड्रेन, पेस्टोरल, एग्रीकल्चरिस्ट, दे वेर नोन एज बिस. बिस जो है, इट इज अ प्रोडक्शन यूनिट. इज नोन एज बिस्पति. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. कई जनरेशन रहते थे एक साथ. एक घर में 75 आदमी रहता था. तो उसमें भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. एल्डेस्ट वाइफ हस्बैंड को कुलपति बोला जाता था. कुलपति, गृहपति और दंपति. एल्डेस्ट वाइफ हस्बैंड को बोला जाता था. बृहस्पति. और देन बृहस्पति से, 20 से नीचे जो है ना, वो जन होता था. जन मतलब ट्राइब. ट्राइब. जन मतलब पीपल एंड ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज ट्राइब. एंड जन का हेड हो गया जनपति. जैसे भरत ट्राइब. यस. एक ग्रुप के लोग नहीं फाइट करते थे, ये दूसरे ट्राइब से फाइट करेंगे. दे विल फाइट विथ अदर ट्राइब. जैसे एक भरत ट्राइब है, दूसरा पुरु ट्राइब है, दे विल कीप ऑन फाइटिंग. एक दूसरे का गाय खोलते रहते थे, बदला चाली रहता था.
That's right, Janpati. And then highest unit is Rashtra. राष्ट्र, और राष्ट्र का जो हेड है, राष्ट्र जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेद में. राष्ट्र वर्ड फर्स्ट टाइम केम इन ऋग्वेद. और राष्ट्र को कैसे डिस्क्राइब करते हैं पता है आपको? भारतवर्ष से जम्बू द्वीप पे. आप इमेजिन करिए कि इंडिया को इमेजिन कर लिया था ऑलरेडी कि व्हाट इज इंडिया. भारतवर्ष जम्बू द्वीप. व्हाट इज इंडिया? इट इज भारतवर्ष जम्बू द्वीप. दिस इज कॉल्ड राष्ट्र. First time in Rig Veda, the word Rashtra is mentioned. Imaginary word. राष्ट्र is not a geographical boundary defined. राष्ट्र पूरे इंडिया को इमेजिन करके बोला गया है. भारतवर्ष जम्बू द्वीप, नॉर्थ एंड सदर्न इंडिया entirely. So geopolitical unity of this India had already achieved during the Rig-Vedic period. They used swords, they had horse, they had chariot, भाला, तीर सब रखते थे वो लोग. तोप तो नहीं रखेंगे ना, फाइटर प्लेन. ठीक है छाया सिंह. So this is a political condition of the Rig Veda, and there were 3 Vedic assemblies. Assembly. Sabha, Samiti, and Vidat. Sabha is assembly of elders. Elders. Sabha is assembly of elders. Women also take part in Sabha. Women also take part in Sabha. And their main function was administrative. Judicial. मोहल्ले में कौन कितने बजे निकला, कब कौन घर आया, ये कौन बताएगी? वुमेन. सीसीटीवी, मॉडर्न सीसीटीवी. तो सभा इज असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज लॉ एंड ऑर्डर. तुरंत पूछ देगा, लॉ एंड ऑर्डर. Samiti, it was election commission.
इलेक्शन कमीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ किंग, किंग का इलेक्शन होता था, इलेक्शन ऑफ किंग, इलेक्शन ऑफ किंग. So in Rig Vedic period there was a republican system, there was republican system, there was election of the king. So Rig Vedic period we have the republican system. And Bidat had redistribution of wealth. किसी ट्राइब से जो लूट करके आए उसको आपस में बांटेंगे, redistribution of wealth. So Rig Vedic period, initially it was republican, but later on it had turned into monarchy. Later on it had turned into monarchy. भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, बोथ आर टुगेदर विशाल. भारतवर्ष और जम्बूद्वीप दोनों एक साथ है. दिस इज नेम ऑफ द राष्ट्र. राष्ट्र वर्ड फर्स्ट टाइम मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. देखो एंशिएंट इंडिया से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, और एक क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस में आएगा पक्का. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. लास्ट टाइम क्वेश्चन केम दैट द कंपेयर द Rig Vedic society with the later Vedic society, right? So this question you can understand how to write. अभी तो हम लोग Rig Vedic पीरियड पढ़ रहे हैं, और सिलेबस जो है ना अभी बिल्कुल ऐसे चलेगा. मौर्यंस पीरियड के बाद देयर विल बी सो मेनी डायनेस्टी कम, सो वहां पर हम लाइन खींच करके आपको बता देंगे. ठीक है, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करिए एक साथ. Is it okay to all of you? Did you note it? Not only note करने की बात नहीं है, समझते हुए नोट करने की बात है. समिति और बिदत में भी वुमेन होता था. Yes, there is a participation of women in both. ग्रेट. मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग ही मैं चूज करता हूं सेशन के लिए. दैट इज अ वेरी नाइस टाइम, so that we can have a maximum energy to rotate everything. ठीक है, विकास, विपिन, दीक्षा, अग्रिमा, ऑल ऑफ यू. सो कीप ऑन राइटिंग. थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपने खरीदा है ना उसको आप पलट के देखते रहिएगा. सिलेबस अभी पूरे एम्पायर में एक ही साथ चल रहा है. जैसे डिवीजन होना स्टार्ट होगा मैं आपको सिलेबस लिख दूंगा. तो 1-2 दिन के बाद सही समय पर आपको डिस्क्राइब करेंगे. That's all for the day. Thank you so much. And strategic time out till morning tomorrow. Thank you, Parmeshwar.